Dr. Soin, you were awarded the Padam Shri in 2010. You've performed the first liver transplant in India. अगर आधे लिवर को निकाल दिया जाए तो वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, वो फिर से पूरा साइज का हो जाता है। How many deaths are actually happening कि जो डोनर की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती? 70% of the time the reason is no donor. लिवर को जिगर बोलते हैं, तो जिगर का टुकड़ा क्यों बोलते हैं? मतलब जिगर का टुकड़ा तो वो कहते हैं हार्ट होता है। यंगस्टर्स में तो ब्रेविडो माना जाता है जी, इसने इतने पैग लगा लिए, इतने शॉट मार लिए। Just 3-4 binge drinking episodes can actually kill your liver. फैटी लिवर अगर स्टेज 1 है, लेट्स से, इट कैन लीड टू साइरोसिस। Yes, of course. डिटॉक्सिफाई लिवर को कौन करेगा? लिवर तो खुद ही एक डिटॉक्सिफाइंग यूनिट है। Any 3 myths or foods that you want to break right now to our audience कि भाई ये मत करो? Dr. Soin, you've performed over 4,500 liver transplants in India, which is the largest in India and second largest in the world. You were awarded the Padam Shri in 2010. You've performed the first liver transplant in India, the first liver transplant, bloodless liver transplant in India. Sir, पहले तो मैं आपको ना तहे दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ that a doctor of your stature, a proud Indian of your stature has contributed so much to this country and given so much. So thank you so much, sir, for coming on this podcast. You are the first डॉक्टर दैट वी हैव ब्रॉट ऑन दिस पॉडकास्ट एंड मैं बहुत क्लियर था सर कि जब हम कोई डॉक्टर को लेके आएंगे यू वुड बी द फर्स्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम विजिटिंग इन मेदांता टुडे इन गुड़गांव एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर सोइन, थैंक यू फॉर योर सर्विस, थैंक यू फॉर जस्ट contributing so much and helping the community forward, sir. Thank you very much, Simarpreet, for having me. And thanks for the kind introduction. It's all very humbling, actually. But yes, it's been a very memorable journey, and I'll be delighted to share it with you. Sir, 1998, almost 26 साल हो गए इस बात को, 25-26 साल. 1998, our research team tells that you had an offer. आपने अपनी ग्रेजुएशन MBBS एम से की, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एम से की, यू वेंट डाउन टू UK, एडिनबरा, आपने पढ़ाई की. 1998 you had an offer from the University of Cambridge. Am I right, sir? That is correct. So I had been at Cambridge University right through from 1993 until 1998. And at that point, I had done my studies, I had qualified in transplantation. Incidentally, I was the first batch in all of UK to qualify formally in transplantation. The qualification degree had just started 2 years prior to that. So, yes, I had an offer for applying for a faculty position in the Department of Surgery at University of Cambridge. And I was told by unofficial sources that I was almost certain to get it. But then there was this opportunity back home in India. So I met with Dr. Pratap Reddy the previous year. 1997 में वो UK आए थे जब उनका दिल्ली का अस्पताल शुरू में एस्टैब्लिश हुआ था. वो कुछ डॉक्टर्स ढूंढ रहे थे अपने हॉस्पिटल को पॉपुलेट करने के लिए, स्पेशलिस्ट्स. तो वो अपनी टीम के साथ UK आए and he met a bunch of us, about 30 of us from all across UK, across all specialties. And he said, Dr. Soin, I know that you're doing good work at Cambridge University with liver transplantation, but you know what? Liver transplantation does not exist in India. And we have set up this absolute state-of-the-art multi-specialty hospital in Delhi, the Delhi Indraprastha Apollo Hospital. Honestly, I hadn't heard of it because I was in the UK and I was in a different kind of ecosystem. But anyway, so his people contacted me. I went and met him, and he looked like a big visionary to me. At that time, I was very young, and I was almost deciding to settle down in the UK and live there for the rest of my life. But then this man showed a lot of grit, and I thought there might be a future there. And of course, we always loved coming back to India at the time that we were in the UK. So I went home and I told my wife, who's also a doctor, who was also doing her research at Cambridge at the time, that अभी
घर चलने का क्या ख्याल है, बिकॉज ये डॉक्टर रेड्डी कह रहे हैं कि वहाँ पे एक बड़ा अच्छा अस्पताल आ रहा है, वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट शुरू करो, पहले कभी हुआ नहीं है, इंडिया में कभी नहीं हुआ, इंडिया पहले। में कभी हुआ नहीं पहले। yeah. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है चलते हैं। आई डिडंट हैव एनी फॉर्मल ऑफर। आई मीन ही टोल्ड मी दैट येस यू नो आई कुड कम एंड स्टार्ट इट, बट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। आजकल तो जो यंग लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट आगे पीछे 10 बार देखते हैं और 6 बार उसको मॉडिफाई करते हैं, पर मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। और मेरे पास इस तरफ अपना एक छोटा सा घर था, एक बच्चा था, बीवी के साथ मैं यूके में बहुत आराम से रहता था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में फैकल्टी पोस्ट मिलने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा चलो इंडिया वापस चलते हैं। This is which month? So this was end of 97, but then we took 4 or 5 months to wind up, and then we returned April. in March of 1998. March of 1998. Yeah. And September, November. And then I joined Apollo Hospital, and then you know we set up the whole system, because UK में क्या होता था कि सारा लिवर ट्रांसप्लांट जो अरेंजमेंट है, जो डिपार्टमेंट है, जो टीम है, वो पूरी तरह सेट थी। तो हमें कॉल आता था इवनिंग में, सर्जन यूज्ड टू बी कॉल्ड मिस्टर, राइट? सो मिस्टर सोइन, देयर इज अ ट्रांसप्लांट scheduled for tomorrow morning 7 o'clock. The donor is in XYZ hospital. I'll send you the details of the possible recipients. So come and do it in the morning. That's all. I just went to the OR at the Addenbrooke's Hospital in Cambridge, where I worked, in the morning at 7 and did a transplant. It was as simple. But when I returned to Delhi, India, and joined Apollo Hospital, there was no team. The team was just me, and there was another surgeon they had recently employed from the US, and the team was just us. There were no intensive care specialists looking after liver कोई transplant किसी का शाम patients. को फोन नहीं आता है कि कोई आप आ जाओ। कोऑर्डिनेटर नहीं था कि शाम को फोन करे कि सुबह आके ट्रांसप्लांट Yeah. कर दो। Yeah. वो खुद ही सब अरेंज करना होता था। सो वी वर द सर्जन्स, वी वर द Coordinators. हेपेटोलॉजिस्ट होते हैं जो लिवर मेडिसिन देखते हैं। Yeah. तो वी वर द हेपेटोलॉजिस्ट, वी वर द कोऑर्डिनेटर्स, वी वर इवन द इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट, और जो एनेस्थीसिया की टीम थी उनको भी उन्होंने कभी लिवर ट्रांसप्लांट किया नहीं था। तो इन शॉर्ट दैट द होल सिस्टम वाज टोटली नॉट गियर्ड अप, द टीम वाज नॉन एग्जिस्टेंट, एंड उसको सेटअप करने में 4-5-6 महीने लगे। और उसके बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई नवंबर में। देयर वाज अ ब्रेन डेड पेशेंट इन द ICU इन अपोलो हॉस्पिटल हुज फैमिली अग्रीड टू डोनेट ऑर्गन्स। उनको मोटिवेट भी हम ही ने किया। आजकल ऐसे नहीं होता है। ट्रांसप्लांट टीम इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द मोटिवेशन ऑफ donors who donate organs after brain death. The families are approached by grief counselors and special transplant coordinators. The transplant team themselves are actually out of this circle. But उन दोनों में वो सब नहीं था, तो हमने खुद ही उनको मोटिवेट किया। उन्होंने डोनेशन के लिए एग्री किया। फिर हम कुछ पेशेंट्स थे हमारे पास, तो उनमें से किसी को हमने मोटिवेट किया कि ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो बहरहाल फिर 5 नवंबर 1998 की शाम को हमने ये सब शुरू किया और ऑर्गन रिट्रीवल किया। पहले हमने ब्रेन डेड डोनर से, और उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट किया, और सुबह ट्रांसप्लांट ख़त्म हुआ और उसके 13 दिन बाद हमने उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। तो ये एक तरह से हिस्ट्री बनी इंडिया में, क्योंकि ये भारत का पहला सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट था। That became India's first liver transplant in 1998. दैट्स करेक्ट। 4500 प्लस आप कर चुके हैं सर। एंड मैं जस्ट आप बोल रहे हैं ना, मेरे को गूज़बम्स आए हैं एकदम कि यार 13 दिन के बाद डिस्चार्ज किया एंड वो इतिहास बना। एंड दैट इज़ वाई आई सेड थैंक यू सर, थैंक यू कि डॉक्टर रेड्डी आप वो मिले, यू गॉट कन्विंस्ड, थैंक यू टू एंटायर फैमिली, आप इधर आए एंड दिस स्टार्टेड। सर क्या एक्सपीरियंस था वैसे वो 13 दिन के बाद? हाउ आई जस्ट वांट टू लिटिल डीप डाइव 2-3 मिनट्स ऑन व्हेन वंस दैट हैपेंड। आपको आइडिया था ये कितनी बड़ी चीज़ बन जाएगी? दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट। उस वक्त जब when you're on the heat of the moment, when the whole event is happening, it doesn't really sink in. But yes, it did sink in later, that it was indeed a landmark of which we had been very fortunately a part of, me and my colleague surgeon, and a handful of anesthesia, nursing colleagues who, although they were not trained enough, but we had kind of trained them on site over the previous few months. So yeah, it felt
वेरी स्पेशल। सर हमारा ना जो पॉडकास्ट का नाम है द जर्नी, और आपकी जर्नी तो हमको सेलिब्रेट करनी ही करनी है। सो वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर सोइन फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। सर we'll go deep dive into liver transplant in as we travel in this podcast. But सर मैं ना सबसे पहले आई वांट टू टच बेस की लिवर के बारे में बात करते हैं। मुझे इसलिए मैं बात करना चाह रहा हूँ सर आज, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी यंग कंट्री टुडे। व्हेन आई से इंडिया इज़ अ वेरी यंग कंट्री, कई फैक्ट्स जो आ रहे हैं कि आज 38%, 35 to 40% लोगों में आज फैटी लिवर है। जी, तकरीबन 3% जो डेथ इंडिया में हो रही हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ लिवर फेलियर। एब्सोल्युटली राइट। एंड जब इंडिया इज़ अ यंग कंट्री और ये जो केसेस हो रहे हैं ये यंगस्टर्स में ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉडकास्ट, द इंटेंट इज़ कि जितने भी यंग लोग और यंग प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स जो अपने mid-20s या 30s या 40s में है, राइट, दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट लाइफ स्टाइल, राइट? सो वी वॉन्ट कि आपके ये पॉडकास्ट बिकम्स ए काइंड ऑफ अ मास्टर क्लास टू देम, व्हाट डूज डोंट्स तो एक चीज़ होगी, बट रियली टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से लिवर फेलियर स्टार्ट हो रहे हैं, लिवर करता क्या क्या चीज़ें। सो दैट इज़ द होल इंटेंट, बिकॉज अ लॉट ऑफ यंग पीपल आर ट्यून्ड इन टू दिस पॉडकास्ट। तो सर मैं बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं, लाइक बचपन में हमने पढ़ा है कि उसको लिवर को जिगर बोलते हैं ना, बिल्कुल जिगर है ना? बोलते हैं। बट मुझे एक बात बताओ सर, फनी थिंग, जिगर का टुकड़ा क्यों बोलते हैं? मतलब जिगर का टुकड़ा तो वो कहते हैं हार्ट होता है, तो कई बार व्हाट इज दिस कि वो मेरे जिगर का टुकड़ा देखो है। ये है कि सब लोग सोचते हैं कि हार्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, एंड दैट हार्ट इज नॉट जस्ट एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट पंप्स ब्लड टू ऑल द अदर ऑर्गन्स एंड मेक्स अस लिव, बट हार्ट इज ऑल्सो द सीट ऑफ इमोशन। ये ट्रेडिशनल है, लेकिन आपने जिगर का टुकड़ा सुना है, जिगरी दोस्त सुना है, ठीक है, इसका जिगर नहीं पड़ता ये सुना है। या तो ये सब इमोशनल राइडर्स नहीं हैं लिवर के ऊपर, हैं कि नहीं? या तो माइथोलॉजिकली ना केवल दिल या हार्ट, बट जिगर या लिवर भी हैज बीन थॉट टू बी सीट ऑफ इमोशन। आपके कोई जिगरी दोस्त हैं, इसका मतलब आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। आपके जिगर का टुकड़ा आपके बेटे बेटी को बोला जाता है, तो इसका मतलब आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जिगर और हार्ट का कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि लिटरल मीनिंग जिगर का तो लिवर होता है, पर उसके अंदर भी एक बहुत ही हाई इमोशनल एलिमेंट छुपा है। आपको एक एग्जांपल देते हैं। लिवर एक अद्भुत अंग है जो रीजनरेट करता है। तो अगर लिवर को, आधे लिवर को निकाल दिया जाए तो वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, वो फिर से पूरा साइज का हो जाता है, ठीक है। अब एक कहानी है प्रोमेथियस की, ग्रीक गॉड की। तो प्रोमेथियस ने क्या किया था, ही स्टोल फायर फ्रॉम द फायर गॉड्स टू गिव इट टू द ह्यूमंस, एंड they wanted to punish him for that. And what they did was they split open his tummy and put his liver to be feasted on by vultures. So the vultures would eat his liver at night, and when they returned the next day, the liver would have grown back to the same size the following day. And why did they give him this punishment? Because they knew about the regenerative qualities of the liver, and they thought this will be like a perpetual punishment for him. Because वो आधा लिवर खाया जाएगा, फिर से वो रीजनरेट होगा, फिर से वो खाया जाएगा, फिर से वो रीजनरेट होगा, ये नेवर एंडिंग स्टोरी होगी। This was like a perpetual punishment for him. So this was the deepest misery that he could have. That's how I'm trying to correlate emotion in the liver to the medical facts. सर बिल्कुल, अगर हमने बिल्कुल लेमैन चीज़ में समझानी हो कि लिवर करता क्या है सर, लाइक लेट्स से 14-year-old or 15-year-old is listening to this, right? What does a liver do? So liver के 500 से ज़्यादा फंक्शन है, और इसीलिए it could be argued that liver is actually a more important organ than the heart. Although ये सही है कि हार्ट की पंपिंग एक्शन से ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स में, बॉडी पार्ट्स में डिलीवर होता है, जिससे वो उनका फंक्शन चलता है, पर एज अ फंक्शन दैट्स ओनली वन फंक्शन,
लेकिन लिवर के इतने सारे फंक्शन हैं कि लिवर फेलियर से सिंपली डेथ हो जाती है। लिवर के बिना लाइफ बिल्कुल नहीं चलती है, जस्ट लाइक हार्ट के बिना लाइफ नहीं चलती है। ये है कि हार्ट बीट रुकने से कुछ मिनटों में इंसान की डेथ होती है, और लिवर के ना काम करने से मे बी अ डे और टू, बट द रिजल्ट इज द सेम। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन है जैसे इट्स द स्टोर हाउस ऑफ द बॉडी, इट्स द फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। आप जो भी खाना यानी कि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, उनकी जो प्रोसेसिंग है वो लिवर में होती है, और उससे फिर प्रोटीन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मसल्स में जाते हैं, मसल बिल्डिंग में यूज़ होते हैं। प्रोटीन जो बॉडी में और हार्मोन्स बनाती है, डिफरेंट थिंग्स हैपन विद द प्रोटीन, वो प्रोटीन वहाँ यूज़ होती है। फैट्स गेट स्टोर्ड, फैट्स, एसेंशियल फैट्स गेट यूटिलाइज्ड, कार्बोहाइड्रेट्स गेट स्टोर्ड। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द लिवर। देन देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फंक्शन, जिसमें कि क्लॉटिंग फैक्टर्स लिवर में बनते हैं। हमें जो चोट लगती है तो जब ब्लड रुकता है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स से रुकता है। अगर लिवर फंक्शन ना अच्छा हो, लिवर फेलियर हो, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होने से ब्लीडिंग चलती जाती है। सो वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ हैविंग significant liver disease is to actually have prolonged bleeding at minor, with minor trauma. Like even brushing your teeth will cause excessive bleeding from gums. That doesn't happen to you and me, but it'll happen to people who have a bad liver and cannot produce the adequate amounts of clotting factors. तो ये हो गया clotting. तीसरी चीज़ है, हमारा सारा जो शरीर है वो हार्मोन से चलता है। I mean, right from adrenal gland hormones to sexual hormones to thyroid hormones, growth hormones, हमारी जो ग्रोथ होती है, सारी चीज़ें हार्मोन से होती हैं। हार्मोन्स आर लाइक केमिकल messages to different parts of the body which make them function the way they should. And these hormones are mostly produced in the liver. I didn't know this. That's that. Then it's the detoxifying kind of plant in our body, which means that if you ingest some bacteria, some harmful substances, like by the oral route, or if they get injected in you by mistake, or you inhale them, eventually they'll be all detoxified in the liver. So liver cells the special cells in liver called macrophages will basically engulf them, destroy them. But when the capacity of the liver to detoxify is kind of pushed to the limit, that means there is excessive load of toxic stuff, then you get ill. And this goes for alcohol also. So जब excessive alcohol ली जाती है, liver उसको detoxify नहीं कर पाता है, तो फिर उसके harmful effects शुरू हो जाते हैं. Then bone strength, muscle strength, विटामिन डी से आती है। तो विटामिन डी का जो फाइनल फॉर्म है उसको विटामिन D3 बोलते हैं, जिससे हमारी बोन स्ट्रेंथ मेंटेन होती है। वो भी, उसका मेटाबॉलिज्म भी लिवर में होता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि फैक्ट्री से लेकर डिटॉक्सिफाइंग और उसके बाद जो हार्मोन्स है और क्लॉटिंग फैक्टर्स है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इम्यून फंक्शन, वो भी लिवर में है। कि आपकी बॉडी की जो मेन इम्यूनिटी है वो एक इम्यून सिस्टम से आती है, और उस सिस्टम का बहुत ही इंटेग्रल कोर पार्ट है लिवर। तो उसी से आपको कैंसर से और इन्फेक्शन से प्रिवेंशन मिलती है। वन मोर फंक्शन यू नीड टू नो एंड एवरीवन नीड्स टू नो, एंड दैट इज द फंक्शन इन डाइजेशन। सो लिवर में बिलिरुबिन बनता है। सो बाइल के अंदर वो बिलिरुबिन होता है, और बाइल की सिक्रीशन होती है। जो बाइल ट्रैक्ट होता है लिवर के अंदर, एक पेड़ के माफिक होता है, तो उसकी ब्रांचेस होती हैं। उसकी मेन ब्रांच में बाइल डक्ट में वो बाइल आती है, और वो फिर आंत में जाती है, और जो डाइजेशन में हेल्प करती है। तो ये भी एक अहम फंक्शन है लिवर का। एंड जो जैसे डायबिटीज़ जिनको हो जाती है, राइट, तो दैट इज़ ऑल्सो जो इंसुलिन सेंसिटिविटी की, हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो, क्योंकि उसने तो लिवर ने तो ग्लाइकोजन स्टोर करना है, राइट, एंड बना के ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन बनाना, स्टोर करना है। एंड दैट इज़ वाई जो डायबिटीज़ भी हम impaired pancreas बात करते हैं, so that is also related to liver not functioning. So that is, you're opening up a whole new box of the function of liver. Well, you're opening a different aspect of the function of liver. अब ऐसा है कि लिवर इज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्लाइकोजन लिवर में और मसल में स्टोर होता है।
बेसिकली. ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन इज द फॉर्म of glucose from the carbohydrates we eat that is storable, that can be stored. तो वो फिर जब ज़रूरत होती है तो वो स्टोर्स को हम यूज़ करते हैं. ग्लाइकोजन स्टोर्स को यूज़ करते हैं इन द सेंस that's broken down into glucose again and then circulated wherever it's needed. बट वो लिवर करता है ना. बट वो लिवर स्टोर. हाँ, लिवर स्टोर करता है. ग्लाइकोजन, सो ग्लाइकोजेनेसिस लिवर में होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी लिवर में होती है. मतलब स्टोरेज के लिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया जब जरूरत पड़ेगी. तो दोनों चीज़ लिवर में होती है. तो लिवर के फंक्शन तो इतने ज़्यादा हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि इनमें से 500 में से 5 फंक्शन भी ना हो तो भी लाइफ नहीं चलती है. अब जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? इंसुलिन इज अ हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय द पैंक्रियास which helps in the utilization of glucose, right? I'll kind of simplify it, right? Now, the diabetes itself doesn't happen because of a liver defect. Diabetes itself happens because of a pancreatic defect. But the defect also lies in insulin resistance, which means that insulin secrete तो हो रही है, लेकिन उसका effect जो liver cells पे होना चाहिए वो हो नहीं रहा है. तो liver cells are kind of not responsive as much as they should be to insulin. That is called insulin resistance. And insulin resistance is not just at the level of the liver, it's also at the level of the muscle cells, right? And yes, insulin resistance is the first kind of indication in the body कि अब डायबिटीज होने वाली है. सर आपने जैसे आपने बताया कि 500 प्लस फंक्शंस हैं, 5 भी नहीं चले तो मतलब मुश्किल हो जाता है ना. सर when we were deep diving into a research, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अराउंड 35 to 40% एक नया टर्म सुने फैटी लिवर. ये लिवर के फंक्शंस तो आपने बिल्कुल बता दिए, राइट, फ्रॉम स्टोरेज टू डिफरेंट फंक्शन, डिटॉक्सिफाई कर रहा है. ये फैटी लिवर क्या चीज़ है सर कि आज कहते हैं कि 40% लोगों में, यंग लोगों में फैटी लिवर है. ये व्हाट इज़ फैटी लिवर एंड हाउ डज इट हैपन? फैटी लिवर क्या है? फैटी लिवर ये है कि लिवर के सेल्स जिनको हेपेटोसाइट्स कहते हैं उसके अंदर फैट जमा हो जाती है. अब नॉर्मली मोस्ट सेल्स विल हैव वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फैट विच इज़ लेस देन 5%. जब 5% से ज़्यादा फैट डिपोजिशन लिवर सेल में होती है, यानी कि उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो 5% से ज़्यादा फैट से भरा हो, तब उसको फैटी लिवर बोलते हैं. अब ऐसा होता है कि 5 to 20% जो फैटी लिवर है उसमें लिवर फंक्शन इतना सिवियरली इफेक्ट नहीं होता है. तो दैट इज़ माइल्ड स्टीएटोसिस और माइल्ड फैटी लिवर. स्टीएटोसिस इज जस्ट अ टेक्निकल टर्म फॉर फैटी लिवर, राइट? लेकिन जब 20% से ज़्यादा स्टीएटोसिस हेपेटिक सेल्स में या हेपेटोसाइट्स में हो जाती है तो फिर उनका बेसिक इंट्रिंसिक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है. तो जितने जितने फंक्शन हमने बताए हैं और जो नहीं भी बताए हैं वो सब अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं और फिर लिवर का स्ट्रक्चर भी ख़राब हो जाता है. तो जब एक्सेसिव फैट होता है तो फिर उसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है. इन्फ्लेमेशन इन द सेंस दैट इन्फ्लेमेटरी सेल्स, सी व्हाट हैपन्स इज दैट व्हेन द फंक्शन ऑफ द लिवर इज डिस्टर्ब्ड, द एंजाइमेटिक मशीनरी इज डिस्टर्ब्ड, देन whenever processes in body are disturbed, inflammatory cells kind of zero in there. They are like the soldiers we have to correct whatever is wrong. But unfortunately with their coming in, then there is inflammation, which means कि liver cells में swelling हो जाती है, तो सूजन हो जाती है, तो उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं. तो पहला स्टेज होता है फैटी लिवर, दूसरा स्टेज होता है स्टीएटोहेपेटाइटिस, यानी कि फैट की वजह से सूजन आ जाना, हेपेटाइटिस हो जाना. फिर उसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है, फिर उसका रिपेयर होता है, फिर इन्फ्लेमेशन होती है, फिर रिपेयर होता है. तो जब इन्फ्लेमेशन और रिपेयर होता है तो क्या होगी? स्कारिंग होगी. कहीं भी चोट लगती है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, वूंड हील करता है, उसके अंदर स्कार होता है. तो इसी तरह लिवर में स्कार हो जाते हैं. फिर क्या अगली स्टेज आती है? स्कारिंग को बोलते हैं फाइब्रोसिस. फाइब्रोस्कैन जैसे कहते हैं ना. तो फाइब्रोस्कैन देखता है कि कितना फाइब्रोसिस हुआ है. राइट. तो उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस. अब फाइब्रोसिस की कई स्टेजेस होती हैं. जब F1, F2 होता है तो ज़्यादा सीरियस नहीं माना जाता है, लेकिन जब F3, F4, F5 फाइब्रोसिस होती है तो फिर उसको सिरोसिस बोलते हैं. सिरोसिस क्या है
कि जब लिवर में बहुत सारे निशान स्कार्स पड़ जाते हैं, फाइब्रोसिस बहुत एक्सटेंसिव हो जाती है, तो फिर उसको सिरोसिस बोलते हैं। अब सिरोसिस के कई कारण हैं। तो मैं फैटी लिवर से मैंने शुरू किया था, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि फैटी लिवर, फिर इन्फ्लेमेशन, फिर फाइब्रोसिस, फिर सिरोसिस, तो फैटी लिवर लिवर फेलियर में बदल सकता है। करेक्ट। तो उसकी जो एंड स्टेज है दैट इज वो है लिवर फेलियर, सिरोसिस। और 25% ऑफ द केसेस ऑफ सिरोसिस विल इवेंचुअली डेवलप लिवर कैंसर। सो फैटी लिवर डिजीज इज नॉट अ इनसिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। 40% लोगों में 40% भारतीयों में फैटी लिवर डिजीज है। और पहले मैं उसके कारण बताना चाहूँगा और फिर मैं वापस जाऊँगा उस प्रोग्रेशन पे जो मैंने आपको पहले बताया कि वो कहाँ तक क्या हार्म कर सकता है। तो उसके कारण क्या है? फैटी लिवर के एक तो कारण है अल्कोहल, तो आप अल्कोहल को छोड़ दीजिए। लेट्स टॉक अबाउट द नॉन अल्कोहलिक कॉजेज ऑफ फैटी लिवर। नाउ दे रिलेट टू लाइफस्टाइल, दे रिलेट टू डायबिटीज। जब डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज कैन कॉज फैटी लिवर to the extent that 70 to 80% of diabetics will have fatty liver. Now, this was not really known until 15, 20 years ago. 15, 20 years is very recent, right? So 70, 80% of diabetics will have fatty liver. Then, if your lipids are bad, that means dyslipidemia, cholesterol ज़्यादा है, triglycerides ज़्यादा हैं, bad cholesterol ज़्यादा है, तो उससे भी फिर fatty liver होता है। तीसरा है obesity. Obesity itself is a risk factor for fatty liver. Now, then I already said lifestyle. So if you have a sedentary lifestyle and if you're eating the wrong things, then you will get fatty liver. सो अभी हम रॉन्ग की बात करें तो जैसे आप बोल रहे हो अल्कोहलिक फैटी लिवर, तो मैं अभी बात नहीं कर रहा, दिस इज नॉन अल्कोहलिक। सो व्हेन यू से रॉन्ग थिंग्स, लोगों के मन में परसेप्शन तो सर ये होती है कि यार शराब, ड्रग्स, सिगरेट ये बैड हो गया। आर वी टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस्ड फूड्स और आर वी टॉकिंग अबाउट द जनरल फूड टुडे जो बच्चे खा रहे हैं आजकल की? बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोसेस्ड फूड इज एन एब्सोल्यूट नो नो। लेट्स टॉक अबाउट अ लिवर फ्रेंडली डाइट। अपने लिवर को कैसे खुश रखें ताकि वो हमें खुश रखे। तो लिवर फ्रेंडली डाइट में क्या है? लिवर फ्रेंडली डाइट में है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, चाहे वो कैंड फूड हो, चाहे वो टेट्रा पैक में हो, वो खराब चीज़ है। Anything that is packaged. Anything that is packaged is not really the best for the liver. Okay? So try and have, if you want to have fruit. Or have juice. But don't have packaged juice in a carton. That's not great. I mean, it's okay to have it sometimes. So high protein diet, do not have processed food. If you're a non-vegetarian, then white meat is okay, but red meat is not good, right? Do not have excessively fried or oily diets, right? But small amounts of olive oil or even desi ghee is good because they have the right kind of essential fatty acids, right? But basically, if you have saturated fats or so-called polyfats, that's a bad idea. And most of the outside tasty fried food has that. Right? So that will tell you what not to have. Then fast food in general is bad, right? And beans are good, green leafy vegetables are good. Now, alcohol of course is bad, but we are not talking about alcohol right now. उस पे आएंगे बाद में। सर मेरे मन में पता है क्या चल रहा है? I am a 90s kid. I was born in 1990, right? तो जो ये प्रोसेस्ड फूड तब ये स्टार्ट हो गए थे, बट इतने ज़्यादा नहीं थे, राइट? बट टुडे लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स विच हैव नाउ चिल्ड्रन, राइट, 4 years, 5 साल, 6 साल के बच्चे हैं, दे आर हैविंग प्रोसेस्ड फूड। मतलब वो बर्गर, पिज़्ज़ा, एंड ये तो 2-3 साल में हम कर रहे हैं। I am just thinking because I'm a huge believer in the India story. बट हमारा अगर एक नॉर्मल इंडियन जो आज यूथ है, कल जाके इसने जो फ्यूचर बनना है, अगर वो हेल्दी नहीं, अगर 3 साल के बच्चा, अगर 4 साल के बच्चे, सर आई सी समटाइम्स कि वो बच्चा कभी खाना नहीं खा रहा हो तो स्क्रीन आगे कर देते हैं एंड उसको ये प्रोसेस्ड फूड, ये ऑल दीज हाई शुगर आइटम्स, आई एम जस्ट लाइक इट्स जस्ट क्रेजी. So all this sweetened stuff, you're talking about, the so-called artificial sweetening and the sodas, the cold drinks and
and even the packaged juices which are sweetened, they have a lot of fructose. And fructose is bad news for glucose metabolism. It leads to, it kind of fuels the development of insulin resistance and diabetes. So that's a bad carb to consume. एंड 40% सर, मैं अगेन दैट नंबर मेरे को ना सर, जब हम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, 40% इज फैटी लिवर. एंड जो आपने प्रोग्रेशन बताया कि फैटी लिवर अगर स्टेज 1 है, लेट्स से, इट कैन लीड टू साइरोसिस. Yes, of course. सो आई एम, मेरे को सर, आई वांट टू टॉक, मतलब 40% क्यों है इंडिया में? क्योंकि इंडिया is the capital of diabetes in the world. We have a very high incidence of diabetes type 2, right? Which is adult onset diabetes, right? And then, despite the fact that you think that we have a lot of undernourished people, we actually have a lot of malnourished people, which means that malnourishment means what? They don't necessarily have to be undernourished, but if they're obese, if they've actually built up their weight with fried food and fast food and, not actually protein-based and vegetable-based diet, then they will definitely have fatty liver. There are communities in which 80% people have fatty liver. So you are saying, sir, जो fatty liver, जो non-alcoholic ये सारे fatty liver है, non-alcoholic की बात हो that रही is only diet, your lifestyle. Diet is processed foods, right? We're That's talking lipids, diabetes, right. It's your all because of BMI and your lifestyle, diet and exercise. That's it. Those are the 5 things that account for non-alcoholic fatty and liver. these, ये जो fatty liver non-alcoholic हो रहा है, this is majority in youngsters now, 20s जो 30s में लोग हैं. So this starts when one is young, but obviously builds up over time. So I think that this is the new scourge of liver disease, fatty liver disease, which is not because of alcohol, but because of poor lifestyle, obesity, diabetes, and bad lipids. अब सबसे important चीज़ ये है कि डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर डिजीज़, ये एक हैन एंड एग स्टोरी है. कि पहले क्या आया? पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस आया, फिर फैटी लिवर भी आ सकता है, फिर डायबिटीज़ भी आ सकती है, या पहले डायबिटीज़ हो सकती है, फिर फैटी लिवर हो सकता है. So insulin resistance, fatty liver disease, and diabetes are at the core of a myriad of problems because of which people die from non-communicable diseases. So unless infection kills someone, the real reasons of death in adults in, let's say, developed societies, I'm not even talking about countries, developed communities, would be cardiovascular disease, fatty liver and cirrhosis, diabetes and its consequences, neurovascular disease, that means strokes, and neurodegenerative disorders like Alzheimer's. So if you actually are able to deal with insulin resistance, diabetes, and fatty liver at an early stage, you will avoid a whole conundrum of diseases which are responsible for 90% of the non-communicable deaths. So by working on these, you will actually enhance people's health spans and lifespans. So this takes us into a whole different domain of longevity. So it is so important to prevent the consequences, to prevent diabetes, to diagnose it early. First, to prevent it. Second, to diagnose it early. And if there's insulin resistance or diabetes, you should look for a fatty liver. And if these one or two of these 3 things are present, then you should look for coronary disease, brain disease, and So what I'm saying is you have to be super careful in preventing and detecting these 3 things: diabetes, fatty liver, and insulin resistance. Because there lies the answer to your actually having a healthy lifespan for most people in the world today. सर, अल्कोहलिक फैटी लिवर जब हम बात करते हैं, राइट, आजकल बिकॉज यंगस्टर्स में तो एक ब्रेविडो माना जाता है जी, इसने इतने पैग लगा लिए, इसे इतने शॉट मार लिए, ये पैग कर लिया है. मैं आई एम एन इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो अगर आई डोंट ड्रिंक, बट अगर आप पीते नहीं, यू लुक डाउन. लाइक आई कम फ्रॉम पंजाब, आई कम फ्रॉम चंडीगढ़. तो नॉर्थ पे तो खासकर, नॉर्थ क्या पूरे इंडिया में ऐसे कि आप शराब नहीं पीते यार, इट इज़ लुक डाउन. सर,
what is data saying on alcoholic fatty liver? आप बोल रहे हो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर इज इतना ज़्यादा बढ़ रहा है. अल्कोहलिक फैटी लिवर, व्हाट इज़ द ब्रेविडो? कई बोलते हैं कि जी 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 वो ना एक पैग लगाना ठीक होता है जी. बड़े सर बहुत मिथ, और इसमें ना मुझे बहुत मिथ्स हैं कि जी वाइन पीनी ठीक होती है जी. सर टॉक, टेक अस थ्रू द अल्कोहलिक फैटी लिवर पार्ट सर. So this might affect the ratings of your podcast, but what I'm going to say is that no amount of alcohol is right. Okay. So as a doctor, as a liver doctor, I'm clearly telling you the amount of alcohol that's good for you and me is a big zero. You should not have any alcohol. Okay. And this is not a moral statement. This is pure health related statement. Right? So no amount of alcohol is good. So I'll talk about how much alcohol you can actually get away having if you must. That's one part. Then I will also talk about this whole story of how many shots anybody has had and all that. So the amount, to prove your superiority among peers. So what's the amount of alcohol that WHO actually allows as a non-addictive, non-harmful dose? That's much higher than what can actually cause harm. So WHO is more like 14 units for men and 11 units for women per week. But what I feel is more like 8 units per 8 units per week for a man and 6 units per week for a woman. And each unit is like a about 350 400 ml of beer or 30 ml of hard liquor or 150 ml of wine. That's what accounts for 1 unit. So if you have more than 8 units a week as a man or more than 6 units a week as a woman, and if you've had it for at least 5 years, just 5 years, you can have serious liver disease. People don't understand this, right? So to put it another way, this is the safe amount of alcohol that one can have, and that only works as social drinking. There is no person who will have just this much if they are alcoholics. They will have 5 times this amount, right? So, in simple words, social drinking up to this level of alcohol is okay if you must drink. But I already told you my major disclosure in the beginning was that no amount of alcohol is good, right? As a liver expert. Now let's move to the shots category. All these 16-year-old to 35-year-olds, having these 6-8 shots in a given night or even more. So this is basically binge drinking. So the bad news is that you don't have to be a chronic alcoholic for the liver to be damaged. Just 3-4 binge drinking episodes can actually kill your liver. This again, not many people realize. So we, in the pandemic especially, we had a whole lot of young people between 20 and 30 who came to us with history of binge drinking over the previous few weeks, and they went into liver failure. Just 2-3 weeks. Few weeks, I mean 2, 3, 4, 6 weeks, whatever. Every weekend or twice a week they would do binge drinking, and one of those episodes actually they would become unconscious. Over 3-4 days, they would develop jaundice. Then they got admitted to the emergency room, and we had to transplant a few of these people. And so binge drinking can actually kill your liver even without having a history of chronic alcoholism. Generally, what's understood and what we agree with is that once you've had alcohol over 10 to 20 years regularly and beyond a certain amount of alcohol, which I just specified, then you develop liver failure. But even without that history, just having had alcohol over very short periods of time, what's a binge? Binge drinking is if you typically have like what would be 6 to 8 units over a space of less than 5 hours. That's considered binge drinking. So if you've had repeated episodes of this, as young people often do, you are risking your life, not just your liver. सर अल्कोहल पर मतलब मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जैसे अल्कोहल इज़ वन आस्पेक्ट, देन ड्रग्स ऑल्सो प्ले अ वेरी वेरी, आई वाज रीडिंग वन ऑफ द रिपोर्ट्स दैट
I think Punjab or I think Haryana reported the maximum cases of liver failures, or I think drug ke karan. So drugs also play a very very important role. Ki what is the correlation? So the answer is no, not directly. I mean, they cause all kinds of harm. We all know that. And nobody here or anywhere is going to advocate anyone having drugs, right? Except for medicinal use. But the kind of drugs that cause harm to the liver are anti-tubercular drugs. So sometimes for tuberculosis, one gets drugs and they can cause harm to the liver. Then alternative medicine drugs, so-called CAM. CAM is complementary and alternative medicine drugs. And a lot of the Ayurvedic drugs fit in that category. Now, I'm not going to sit here and, say bad things about Ayurveda, but if the source is not clear, the prescription is not clear, the manufacturer is dodgy. So basically, non-certified जो देसी इलाज desi fever कहते हैं, ilaj, हाँ, whether it's Ayurveda or naturopathy, again, I'm not talking about homeopathy. Scientific homeopathy works. That's a separate thing. But I'm talking about देसी जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, एलोपैथिक जो नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कोई सोर्स नहीं है, कोई प्रॉपर इन्फॉर्म्ड पर्सन की बैकिंग नहीं है, आपने कहीं से भी कुछ भी ले लिया इंटरनेट पे पढ़ के, दैट कुड बी वेरी हार्मफुल. एंड आई हैव पर्सनली हैड पेशेंट्स who've had liver failure, who've needed transplant after excessive doses of Giloy juice and so on and so forth, right? And all kinds of other so-called Ayurvedic drugs, many of which have excessive amounts of steroids. So, uncontrolled, non-reliable sources of alternative medicines is a major cause of drug-induced liver failure. सर मैं ना प्रोग्रेशन पे दोबारा आना चाहता हूँ, राइट, बिकॉज आई वांट टू कम एट साइरोसिस एंड देन मूव टू द अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट इज लिवर ट्रांसप्लांट इन इटसेल्फ, राइट. सो आपने प्रोग्रेशन में बताया फैटी लिवर, राइट. फैटी लिवर नॉन अल्कोहलिक या अल्कोहलिक सी हो सकता है. फैटी लिवर इन्फ्लेमेशन आपने बताई, इट कैन हैव हेपेटाइटिस हो गया. स्टेज 3 में अगर हम आते हैं कि इन्फ्लेमेशन करके साइरोसिस हो जाता है. नाउ let's say the progression happens till cirrhosis हो जाता है, right. Now when does, सर मुझे पहले तो और सिंपली आप बताओ cirrhosis है क्या. जैसे आपने बताया कि उस पर अगर इन्फ्लेमेशन के कारण आ गया, एंड देन when does liver transplant happen? So that's a very good question. Cirrhosis of the liver is not a disease. It's the end result of many diseases. Cirrhosis of a liver is like burnt wood. There could be many causes why the wood gets burnt, right? So cirrhosis means simply that the liver tissue is replaced more than 50% with scars, which are useless. They're not actually cells or tissue anymore. Let's look at the example of a skin scar. If you've had a deep injury while you were a child, you will have a scar that will be there for the rest of your life. There won't be any normal skin cells there. And there is no medicine that can cure that. I mean, you can excise it, but there'll be another scar, right? So a scar is forever and it has no function. Similarly, when liver gets injured from either alcohol or non-alcoholic fatty liver or a virus, there is basically scarring after healing happens. All healing in the body leads to a scar. Sometimes minor scar, which disappears, and sometimes major scars, which don't disappear. So when more than 50% of the liver cells are actually substituted by just scar tissue, that's called cirrhosis. And you can get cirrhosis from a host of causes: alcohol, non-alcoholic fatty liver, hepatitis B, hepatitis C, some rare biliary diseases. All these eventually mean what? They have damaged the liver, then they have caused inflammation, so there is initial damage, then there is hepatitis, which means inflammation. और इन्फ्लेमेशन के बाद जब हीलिंग होती है और उसमें फाइब्रोसिस, थोड़े थोड़े स्कार्स आते हैं, और जब फाइब्रोसिस बढ़ जाती है तो उसको सिरोसिस बोलते हैं. तो ये सिरोसिस है. अब जब सिरोसिस होती है तो क्या होता है कि लिवर में रीजनरेशन होती है. तो जब इंजरी हुई, हीलिंग हुई, रीजनरेशन हुई, लिवर ट्राइज टू रिस्टोर द टिश्यू, समटाइम्स दैट रीजनरेशन goes wrong and cancer develops.
कैंसर क्या होता है? कैंसर आर डिवाइडिंग सेल्स विच द बॉडी हैज़ नो कंट्रोल ओवर. एंड रीजनरेशन क्या होती है? They are dividing cells which reconstitute the injured cells. So somewhere along the path where normal cells were supposed to replace the injured cells, those become cancerous cells. So 20 to 25% of cases of cirrhosis will eventually develop liver cancer. Liver cancer is a very unique kind of cancer which always develops in an injured liver. Kidney cancer, colon cancer, breast cancer, ovarian cancer, brain cancer can develop in normal tissue. Liver cancer does not develop in normal tissue. It always develops in an injured tissue. In 98-99% cases. And sir, जैसे burnt wood is a great example, right? अब मेरा एक और क्वेश्चन है बिफोर वी अगेन एंटर द लिवर ट्रांसप्लांट. अगर सर लिवर रीजनरेट खुद कर लेता है, राइट, सो लिवर ट्रांसप्लांट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? अगर वो खुद ही सेल्फ हीलर है और इतना इंपॉर्टेंट है, वो खुद कर लेता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका आंसर भी एक्चुअली सिंपल है कि जो भी इंजरी ओरिजिनली लिवर को लग रही थी, चाहे वो फैट था, चाहे वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ थी, चाहे वो एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल था या वायरस था, लिवर की रीजनरेटिव कैपेसिटी एक पॉइंट पे एक्सीड हो जाती है. जब इंजरी ज़्यादा है और रीजनरेशन सफिशेंट नहीं है, तो इंजरी काइंड ऑफ takes over, that path takes over, and then injury, fibrosis, scarring, cancer happens. The regeneration has been happening, but not enough. So that is why end-stage liver disease happens. When do you declare a patient को liver transplant की ज़रूरत है? We've entered the liver transplant now. वो कब होता है? And then we'll go understand the process of it. तो ऐसा है कि लिवर की दो यूनिक क्वालिटीज़ हैं. एक है रीजनरेशन और एक है रिजर्व. तो लिवर के रिजर्व भी बहुत अच्छे होते हैं. यहाँ तक कि 70% आप समझ लीजिए, अगर लिवर डैमेज हो जाए तो 30% लिवर से भी इंसान की लाइफ ठीक ठाक चल सकती है. लेकिन जब 70% से ज़्यादा लिवर डैमेज हो जाता है तो रिमेनिंग 25-27% लिवर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं. फिर सिम्टम्स आते हैं. फिर अगर लिवर फंक्शन अच्छा ना हो तो फिर हमें सिम्टम्स आते हैं, दिखने लग जाता है, टेस्ट में खराबी आ जाती है. तो जब लिवर ट्रांसप्लांट की बात होती है तो हम लिवर ट्रांसप्लांट उसके लिए करते हैं जिन्हें और किसी दवाई से इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है. और वो पॉइंट तब आता है कि जब लिवर का डैमेज इतना हो गया है, चाहे वो अक्यूट लिवर फेलियर से हो, अक्यूट मतलब है कि सडनली डेवलप हुआ कुछ दिन या कुछ हफ्तों में, या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ से हो, यानी कि कुछ सालों से चल रही है या बहुत सालों से चल रही है, या लिवर कैंसर से हो जो दोनों तरफ लिवर में कैंसर हो गया है लेकिन बाहर कहीं नहीं फैला है, तो फिर वो लिवर चेंज करने से वो कैंसर क्योर हो सकता है. तो ये 3 मेन प्रमुख कारण होते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट हम करते हैं. तो जब ये चीज़ें होती हैं तो तब उसके कुछ लक्षण आते हैं. तो उन लक्षण के बेसिस पे प्लस जो लैब वैल्यूज़ में abnormalities आती हैं उनके बेसिस पे ट्रांसप्लांट डिसाइड होता है. तो experienced people like myself and other liver experts, obviously when we meet a patient and we see certain profile and certain problems, even just by examining the patient, I can tell whether the person needs a transplant or not, but not every time. We often need to be aided by laboratory tests and symptoms and signs. Now, there are 2 particular scores. So how does a doctor in Delhi do the same sort of thing and the same justice to his patient as one sitting in the US does to her patient? How does that happen? That happens through common scores which everybody follows. So there are 2 scores. One is called CTP score, the other one is called MELD score, which are all based on symptoms and lab values. तो जब लिवर की खराबी से किसी को जॉन्डिस होता है, यानी कि पीलापन आता है आँखों में, स्किन में पीलापन आता है, यूरिन में पीलापन आता है, और लैब वैल्यू में बिलिरुबिन की वैल्यू 2.5 से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको जॉन्डिस बोलते हैं. तो किसी को जॉन्डिस हो जाए, किसी के पेट में पानी आ जाए, किसी को ब्लीडिंग टेंडेंसी हो, ब्लीडिंग बंद ही ना हो, कोई माइनर इंजरी हुई तो 1 दिन तक ब्लीडिंग चलती रही, तो और जब लिवर डिटॉक्सिफाई नहीं करता है तो वो सब्सटेंसेस कैन रीच द ब्रेन, सो गफलत आ जाती है, ड्राउजीनेस आ जाती है, कन्फ्यूजन आ जाता है, कोमा आ जाता है, प्री कोमा आता है और फिर कोमा आता है. तो ये सारे जो
सिम्टम्स हैं और जो लैब वैल्यूज़ हैं, इनको मिलाकर ही ये स्कोर्स बने हैं। तो CTP में क्या होता है? CTP में 5 चीज़ें होती हैं: बिलिरुबिन वैल्यू, एल्ब्यूमिन वैल्यू, प्रेजेंस ऑफ ascites यानी कि पेट में पानी, और hepatic encephalopathy, which means brain पे effect of the liver not detoxifying toxic products, right? And something called INR, which is the bleeding tendency. तो ये 5 की वैल्यू देखकर फिर हम डिसाइड करते हैं कि उनका स्कोर कितना है, उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है अगर उनका स्कोर 8 से ज़्यादा है। इसी तरह मेल्ट स्कोर होता है, उसमें किडनी फंक्शन देखा जाता है, INR देखा जाता है और बिलिरुबिन, 3 चीज़ देखी जाती है। तो ये सब की वैल्यू बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट होने से, like when the MELD is 15 or more, then they need a transplant. So, doctor's experience plus lab values plus symptoms, and these are pretty standard across the world. तो आप किसी भी लिवर एक्सपर्ट से मिलेंगे, अगर एक ने बोल दिया ट्रांसप्लांट चाहिए तो 99% दूसरा भी बोलेगा कि ट्रांसप्लांट चाहिए। सर, आपने 4500 प्लस लिवर ट्रांसप्लांट्स कर लिए हैं अपने अभी तक। 20 to 25 आई थिंक पर मंथ आप करते हैं, आपकी टीम अराउंड More like 25 to 30. 25 to 30। अब क्लियर हो गया कि चाहिए लिवर ट्रांसप्लांट करना है, राइट? अब क्या प्रोसेस है सर कि एक पेशेंट का लिवर ट्रांसप्लांट होना है, राइट? तो बिल्कुल सिंपली सर क्या प्रोसेस होगा उसके बाद? हु विल कम फॉरवर्ड एज डोनर, क्या रहेगा? मुझे वो प्रोसेस आप बताओ, देन विल गो इनटू द डोनर पार्ट ऑफ थिंग्स। जी बिल्कुल। तो ऐसा है कि जब पेशेंट मेरे पास आते हैं और उनकी जो क्लिनिकल हिस्ट्री है, जो एग्ज़ाम है, जो सिम्टम्स हैं और जो लैब वैल्यूज़ हैं, दे कन्फर्म टू समवन हु नीड्स अ ट्रांसप्लांट, देन आई विल सजेस्ट अ ट्रांसप्लांट टू देम। तो हर बारी मैं उनको ये बोलता हूँ कि देखिए, ट्रांसप्लांट में 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 के ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, वो लिवर एक्सपर्ट आपको बताएगा और उसको आपको फिर एक्सेप्ट करना है। दूसरा है फिनेंसिस एंड तीसरा है डोनर। तो डोनर कहाँ से आते हैं? अब ऑब्वियसली इंसान का लिवर यूज़ होता है, चाहे मृत इंसान हो चाहे जीवित इंसान हो। तो मृत इंसान के लिवर को बोलते हैं कैडेवरिक लिवर, यानी कि ब्रेन डेथ होने के बाद परिवार वाले, जो लव्ड वंस, will choose to donate organs of that person who is met with brain death. So brain death, incidentally, is death, right? The only difference is that these people are in a neuro ICU. They are on life support. Their brain is irreversibly gone and damaged and dead. There are criteria, medical criteria, by which brain death is announced. And once somebody is dead, if their relatives agree to donate organs, then such a person is taken to the OR, the organs are removed, and then they are transplanted. I just wanted to kind of, on the side, tell you what cadaveric donation is. So that's one kind of donor. The other kind of donor is a living donor. And living donor is relevant for liver transplantation and kidney transplantation. लिवर ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि परिवार का एक सदस्य जो 18 से 55 वर्ष की आयु हो और ओवरवेट ना हो, अपने BMI हाइट के हिसाब से वेट हो, 10% ओवर चलता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। सो फैमिली मेम्बर 18 से 55 ओवरवेट ना हो और ब्लड ग्रुप मैचिंग हो, यानी कि अगर किसी का B है तो B या O। सो दिस रिस्पेक्ट्स द compatibility of blood groups even for blood donation. Similarly, it's for organ donation, right? तो ये इस तरह का इंसान डोनेट कर सकता है। तो ये स्क्रीनिंग के 4 ही क्राइटेरिया हैं। फैमिली मेंबर, जेंडर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फैमिली मेंबर 18 से 55, ओवरवेट ना हो और ब्लड ग्रुप मैचिंग हो, ये एंट्री क्राइटेरिया है। इसके बाद हम इवैल्यूएशन करेंगे डोनर की और पेशेंट की। तो कौन से रिश्तेदार डोनेट कर सकते हैं? नियर रिलेटिव्स, जो कि इंडियन लॉ के हिसाब से स्पाउस हो सकता है, बच्चे, पेरेंट्स, बहन, भाई, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड चिल्ड्रन, ये हो गया नियर रिलेटिव्स। फिर होता है एक्सटेंडेड फैमिली, यानी कि मामा, चाचा, भतीजा, भांजा, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जो कि रियल रिलेटिव्स हैं बट नेक्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है। तो ये लोग कर सकते हैं। फिर मैं उनको, फैमिली को बोलता हूँ कि देखिए, अब जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि पहले डोनर का और पेशेंट का 3 से 4 दिन तक इवैल्यूएशन होगा। उसमें सेफ्टी देखी जाती है, डोनर की, पेशेंट की, और मैचिंग देखी जाती है। तो ये सेफ्टी और मैचिंग हो जाए, फिर उसके अगले 6-8 दिन में लीगल क्लियरेंस के बाद ट्रांसप्लांट होता है। ट्रांसप्लांट में क्या होता है, मैं आपको लिवर का मॉडल दिखाता हूँ। ये लिवर है, अप्रॉक्सीमेटली इस साइज़ का होता है, यहाँ पे होता है अपर पार्ट ऑफ द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। तो हम क्या करते हैं कि एक बारी इवैल्यूएशन हो गया,
लिवर की सूटेबिलिटी, पेशेंट की, डोनर की सेफ्टी देखी गई, उसके बाद हम ऑपरेशन होता है साथ साथ वाले ऑपरेटिंग रूम्स में। तो डोनर ऑपरेटिंग रूम में से हम जब डोनर का ऑपरेशन करते हैं तो डोनर का पहले गॉल ब्लैडर निकलेगा, जिससे कोई नुकसान नहीं होता है डोनर को, और फिर उसके बाद लिवर का राइट साइड हम डोनर का निकालते हैं। अडल्ट के लिए राइट साइड निकालते हैं, बच्चों के लिए थोड़ा छोटा लिवर निकालते हैं लेफ्ट साइड। तो डोनर से हम पार्टली लिवर निकाल के, लेट्स से राइट साइडेड लिवर फॉर एन एडल्ट पेशेंट करके, हम पेशेंट को लगाते हैं दूसरे ऑपरेटिंग थिएटर में, उनका अपना लिवर पूरा निकाल देते हैं। जितना लिवर डोनर का बचता है और जितना पेशेंट में जाता है, दोनों बढ़ के फुल साइज के दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। मैंने आपको पहले बोला कि लिवर हैज़ एन अमेजिंग रीजनरेटिव कैपेसिटी, राइट? सो both sides, donor side and the patient How much side, time? will regenerate within 2 to 3 months. 2 to 3 months. So if you started out with 1100 grams of liver in the donor and you took away 650, it will become 1100 again in 2 to 3 months in the donor, and the 650 that goes to the recipient will also regenerate to what's normal for the recipient according to his weight and build. So it will regenerate to his normal size liver. So basically, in effect, you get 2 livers out of 1. राइट? एंड डोनर को फिर ऑपरेशन के बाद हम 6-7 दिन में घर भेज देते हैं, और पेशेंट को ऑपरेशन के बाद 12 से 15 दिन में घर भेज देते हैं। डोनर की सब दवाइयाँ 15-20 दिन में बंद हो जाती हैं और 1 महीने में उनकी लाइफ नॉर्मल आ जाती है, चाहे वो मेल डोनर हो, फीमेल डोनर हो, यंग हो, मिडल एज्ड हो। देयर लाइफ इज रिस्टोर्ड बैक टू नॉर्मल इन अ मंथ, विच मीन्स चलना फिरना, खाना पीना, मतलब जो पहले कर रहे थे they can do. बिल्कुल, डाइट, चलना फिरना, पर्सनल लाइफ, वर्किंग, ड्राइविंग, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल इन 1 month. एंड इफ दे वांट टू do gym or sport or whatever, even that can be started at 3 to 4 months, and it can go full pep in 6 months. Or if ladies want to become pregnant, then they can conceive after 3 months, and everything works normally. पेशेंट का क्या होता है, 12 से 15 दिन में डिस्चार्ज हुए, 1.5 से 2 महीने में उनकी लाइफ नॉर्मल आ जाती है। वो दे आर लाइक अ नॉर्मल पर्सन, लुकिंग एट देम यू कांट टेल दैट they've had a transplant. It's a very, very dramatic kind of treatment where their life from almost being lost is saved and they're given a new life. And the current success rates of liver transplantation in our system are 95% for adults and 97% for children. And for donors, the safety is 99.99%. 0.01 is the kind of risk that you and I have when we're crossing the road or driving a car or everyday life, right? So I've just kind of put everything in brief how this works. सर ये वाला आपने एक्सप्लेन किया कि डोनर अवेलेबल है, राइट? वेदर उसके कोई नियर वन डोनेट करता है या किसी ने ऑलरेडी आफ्टर डेथ डोनर अवेलेबल है, राइट? उन्होंने, उनकी फैमिली ने किया है। सर यू परफॉर्म द हाइएस्ट नंबर इन इंडिया, सेकंड इन द वर्ल्ड, राइट? हाउ मेनी डेथ्स आर एक्चुअली हैपनिंग कि जो डोनर की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती? आई वॉन्ट टू टच बेस दैट बिकॉज वाइल वी वर रीडिंग देर इज़ अ बिग इशू, बहुत बड़ा एक स्टिग्मा है सर, ये डोनर अवेलेबिलिटी, लोग दान ही नहीं करते। कैन यू get into that aspect? So sir? let's get into the donation for organ transplantation. Just to give you a perspective, I see at least 125 to 150 patients every month that need transplant, at least, because I see 8 or 9 every day. But I don't do 150 transplants a month. I only do 28 transplants, right? And why do I not do so many? Why do I not service the remaining 100 people? 70% of the time, the reason is no donor, right? And 30% of the time, it's finances. I mean, these are the rough figures. So yes, availability of donors is a huge issue. Countrywide, we need to do possibly about 25 per million population. So we need to do close to 40,000 transplants. And in India, only 3,500 are done. So we're doing a tenth of what we should be doing. And of course, access and cost may be part of the reason, but I think that is only a reason in 30-40% cases. 60% of the time, it's absence of donors or scarcity of donors. Now, how do we make good that?
One is to push the concept of cadaveric donation, which means that donation after brain death. Now, mind you, brain death is only 1% of all deaths. Like regular person dying at home is not a brain death. Brain death is when specifically a person who's got a injury to the brain, either from an accident or a stroke or a tumor, dies in a neuro ICU. That's when it's brain death. I mean, there's some exceptions, but generally it can happen with drowning and other things, some drug overdose. But by and large, these are the kind of patients who will then become prospective organ donors. So 1% of all deaths are brain deaths. They happen in a ICU, and a large proportion of them, I would say at least 40 or 50%, could potentially become organ donors. We only have 1,000, 1,100 organ donors in the entire country. Sir, Can you imagine? are you saying 1100? No. 1,100 a year in the entire country. Our donation rates are 0.7 to 0.8 per million. The donation rates in Spain are 50 per million. In the US, they are 43 per million. In the UK, they are 30 per million. And I'm not one of those who keeps citing figures from US and UK. But this is a good thing they do. And we need to be doing the same thing. Right? So now that we've gotten into this organ donation story, the effort has to be on the non-governmental side, on the hospital side, and on the governmental side. So the state has to promote awareness. Now, any health kind of awareness that has to be countrywide can only be done by the government. It can't be done by you and me, obviously, right? Whether it is putting that stuff in school and college books so that children get to hear about this right from the beginning, right? Or having a box to be ticked in the driving license which says, will you be an organ donor? These are things that happen across the world and they are doable here. It's got nothing to do with the stage of development of a country, right? So Indians are generally very religious. So these should be promoted through religious institutions and the guardians of religion, right? Why not? They should be promoted in communities, outside of hospitals, outside of schools and colleges, which we've already talked about. But communities, there's so many different kinds of communities in the country, right? Different walks of life. Every collection of people is a community, right? So promotion of organ donation, the benefits of organ donation in terms of saving lives from transplantation, the fact that if you've donated 4 organs after your brain death, you won't be missing those organs when you're born the next time around. This is what a lot of people think, sadly, right? But then they would burn the body, right? Or bury it. What good is that to anyone, right? So I'm pretty passionate about that, as you can see. So don't even take me down that route fully. But just to suffice it to say that, awareness for organ donation needs to be pumped up manyfold. Then let's come to living donation. Now, I did talk about living liver donation. Similarly, donating 1 kidney out of the 2 that most people have would be completely safe because the second kidney takes over the function of the missing kidney. It enlarges, it increases the efficiency, and usually about 80 to 90% of the efficiency returns even after 1 kidney donation, in the sense that suppose you had 100 function before the kidney donation, you would have a 85 to 90 function after kidney donation, which is absolutely adequate for the donor for the rest of their life. Liver, of course, I've said that liver regenerates to normal size, so you've lost nothing. Now, people are afraid, one, that after donating a part of their liver or after donating 1 kidney, they will have a suboptimal life. They might run into trouble with diseases. They will have a scar. So all these myths need to be dispelled. And we do our bit at the hospital level and on social media and stuff. But more needs to be done. One of the things we have done to motivate donors to donate without the fear of a big scar is robotic donor surgery. And I introduced this in India about 10 or 11 years ago. And now this is picked up. There are at least 5 or 6 major robotic donor surgery centers. Ours is, of course, the biggest one. And what is robotic donor surgery for liver? Briefly, I'll tell you what happens is that instead of making a big cut across the tummy like that, because the liver's here,
So you generally open surgeries like that. You do the surgery through 3-4 small little holes with fine instruments, which are at the end of a robot. But the robot doesn't do the surgery, the surgeon does the surgery, because I sit at the console which controls the robotic arms, right? So I do the robotic surgery through with those fine instruments, through those holes. And when it comes to removing the part of the liver that's to be donated, that is removed through a small cut above the pubic bone, below the belt, about 9-10 centimeter. And we take it out. So that cut is hidden, it's small, the pain is less, the recovery is fast, and there is no big gash across the front of your tummy. So, believe you me, every donor that walks into my office now, in the sense the family who has a patient and there's a donor in the family, they want to have robotic surgery. There's an extra cost attached of around 3 lakh rupees. It's just the way the machine is, it's made by an American company, Intuitive Surgical, and they just priced it very high, the instruments and all. So anyway, so 3 lakhs extra expenditures. So 20% patients are not able to afford that, but the 80% of the patients actually have robotic surgery nowadays in my institution, in my liver institute. And we have done a survey over the last 3.5-4 years that we've been using this extensively. The willingness for donation has gone up fourfold. It's much easier to convince relatives to donate now. स्कार इतना उनको लगता है कि स्कार हो जाएगा. अब शुरू में लगता है, लेकिन मैंने ये रोबोटिक तो 350 करीब केस किए हैं हमने, पर 4000 तो बिना रोबोट के किए हैं. अब वो 4000 में डोनर मुझे आज तक एक भी नहीं मिला जो नाखुश है. लेकिन ऑपरेशन से पहले डर लगता है. बाद में जब डोनेशन हो गई और उनका लव्ड वन सेव हो गया, फिर तो स्कार इज नॉट रियली इम्पॉर्टेंट. तो आई थिंक दैट स्प्रेड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड अडॉप्शन ऑफ व्हाट वी कॉल मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स, जिसमें कट्स कम लगते हैं और पेनफुल नहीं होता है. सर इंडिया इतना डाइवर्स है. आपने फाइनेंस की बात की. टिपिकली सर 150 करोड़ पीपल आर देयर, सो मच डाइवर्सिटी इज़ देयर. नहीं अफोर्ड कर पाते लोग. सो आपने बोला 30% डोनर्स नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ फाइनेंस. सो कॉस्ट क्या है सर? एवरेज कॉस्ट कितनी पड़ती है सर लिवर ट्रांसप्लांट में? एंड हाउ डू यू थिंक सर इन द लॉन्ग टर्म व्हाट पार्ट द स्टेट और द मशीनरी कैन टेक कि कॉस्ट भी इसकी नीचे जाए? देखिए, जो लिवर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट है वो है करीब 22-23 lakhs इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फॉर अडल्ट्स एंड अबाउट 17 lakhs फॉर चिल्ड्रन. ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है. और हम इसको प्राइवेट, दिस इज इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, बट अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लाइक Medanta, वी ऑल्सो सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. सो दोज आर ऑन अ मच लोअर पैकेज of around 14 lakhs. So we have a significant proportion of such patients who are on subsidy. तो ये तो कॉस्ट है. लेकिन अब ये तो, और इसकी कॉस्ट कहाँ से आती है? कॉस्ट या तो एम्प्लॉयर देगा, जैसे गवर्नमेंट की CGHS सिस्टम, ECHS सिस्टम है, वो देते हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनी देगी. तो currently in the last 2 years, like 2022 and 2023, we analyzed, we had nearly 60% patients who were not getting reimbursed by the employer who had insurance. So insurance rates, insurance coverages are going up. Now it is fairly common to have coverage of 25, 30, 50 lakhs for insurance, for health insurance. Until 10 years ago, this used to be 3 lakhs, 4 lakhs, right? I mean, some people have less, but it's very common to see people have quite a good health insurance coverage. So out of pocket है, लेकिन insurance covers a lot. The employer covers some bit. Sometimes government employers, sometimes even private employers give some money. तो और इंडिया में एक तरह से तो एक्सपेंसिव है एक इंडियन पॉकेट के लिए, लेकिन अगर ग्लोबली अगर आप देखें सिचुएशन को, तो 22 lakhs तो मतलब बहुत ही कम एक्सपेंस है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए. US में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिवर ट्रांसप्लांट कॉस्ट $300,000 and a complicated one can cost up to $500,000, even more. Which is upwards of like 3-4 करोड़ की बात कर रहे हैं. 20 लाख से 3-4 करोड़ की बात कर रहे हैं. 10 गुना से ज़्यादा. बट सर 20 लाख भी तो एक नॉर्मल सर जो बिल्कुल एक गरीब आदमी है उसको 20 लाख इज नॉट अफोर्डेबल. मैं तो आपको कह ही रहा हूँ कि भारत के लिए तो ज़्यादा है. तो कैसे हो सकता है सर ये? लेकिन कम, द प्रॉब्लम इज ये कम नहीं हो सकता. नहीं हो सकता सर.
कम नहीं हो अगर सो ये वॉल्यूम बढ़ेगी ये तब भी मैंने नहीं. ये मैंने सिंपल सी स्टेटमेंट बोली है. इट मे बी इन्फ्लामेटरी फॉर सम, बट यू कैन नॉट एक्चुअली रिड्यूस इट. सो लेट मी टेल यू अ वेरी सिंपल एनालिसिस. You come to Medanta Hospital, you go to a Mayo Clinic or a MD Anderson or a, any good hospital, let's say Mount Sinai in New York. There is no difference in the kind of care you have, in the kind of facility you have, the instruments, the expertise, everything is the same. Now, if they are charging 15 times more, how much more can you reduce our cost? You see, because the cost of machinery is the same. I just told you about the cost of the robotic machine. I mean, it's like $2 million. The instruments are costly. Like the disposable instruments which are used fresh for every case, they are costly. So there's a limit to which you can reduce the cost. Now, there are some essential drugs which are costly. Blood products have bags. Each of the bags costs 12, 14, 16,000 rupees. You need 10 of those for the surgery. So how can you reduce the cost too much? I mean, let me tell you, the first case I did, which we talked about at the beginning of this podcast, the package given to the patient was 18.5 lakhs. 25 years ago. And I've just told you 22 lakhs right now. Tell me one thing that has remained the same or just gone up by 10% for the last 25 years. Nothing. So we cannot actually cut down the cost anymore. Even if you do it at AIIMS, All India Institute of Medical Sciences, which is incidentally my alma mater, where I have run their program pro bono for 7-8 years. Even there, the cost will be 16-17 lakhs because you take away the cost of the salaries of the team. But the rest of the cost is the same. So you can't really reduce it anymore. Sir, since we are at liver transplant वाले topic and आप passionate तो sir हो ही गए थे, but you are little emotional भी हो sir इस part पे. I can see that while you are talking. Sir, because आपने myths की बात की, right? 3 sir कोई for the viewers, any 3 most absurd myths that you want to just break right now, right? कि जो आपने सुने हो, जैसे एक तो आपने बता ही दिया कि कि अगली लाइफ में होगा नहीं, वो 4 ऑर्गन्स नहीं होंगे, बट एनीथिंग, बिकॉज आई रियली फील सर कि ऑर्गन डोनेशन एंड खासकर से इन सिखिज्म ऑल्सो सेवा इज सच अ वेरी वेरी डीप रूटेड इन टू आवर कल्चर कम्युनिटी, मोस्ट कम्युनिटीज. एनी 3 myths that you want to sir just break right now, sir? One peg of whiskey or 1 glass of wine a day is good for the liver. Complete myth. Wrong. Donating a part of the liver maims you for life. It makes you more susceptible to have disease, shortens your life, gives you poor quality of life. Complete myth. Wrong. After donating a part of your liver, you live like an absolutely normal person, really happy because you saved someone's life. In addition to that, you're having a normal life quality and length yourself. Right? So these are 2 myths I would definitely like to dispel. The third one, you already stole mine, right? I told you that people believe that after donating organs after death, those particular organs will be missing the next time around. So that is really not true, right? Another myth is people believe that after transplantation, you only live for 5 or 10 years. But that is completely wrong. If you've had a liver transplant at the age of 6 months, you will live to the ripe old age of 100, God willing. So the liver is a lifelong organ. It's not got a shelf life for 3, 5 or 10 years. So I don't know why people believe this, but this is completely wrong. We read sir कि जिसका पहला liver transplant एक बच्चे का हुआ था, वो डॉक्टर बन गया अभी. It was in the news also. So the first kid that we transplanted was on 15th of November 1998, which was 10 days after the first case. So this was really the second case, but the first kid that had a successful transplant. Yeah. His name is Sanjay. He was about 20 months old. He was just this big because he was very small because of his liver failure. And he was brought dying to us. And we transplanted him. We used the left side of his father's liver. About 20% of his father's liver was used for his transplant. And we did his transplant. He had a pretty stormy post-operative course. He was in the ICU for 60 days. And 3 doctors, me, my colleague surgeon, and a hepatologist, 3 of us spent 20 days each
That means we made up those 60 days of duties in the ICU. We actually slept those nights in the ICU taking care of the baby, right? In rotation, three of us. He got discharged on day 70 or 72 or something like that. So he's now 6 feet tall. He's a 28-year-old doctor. He has a job. He has a girlfriend. He has a life. So You met him, sir? Now yeah, I have met him recently. It's life. In fact, he wanted to work in my. He's a doctor, so he said he wants to work in transplantation. So he wanted a job in my department. So that's life coming back a full circle. I offered him a job, but then his parents wanted him to work closer to home. So he's out of he lives in Chennai. His parents are in Chennai, so he's working in Bangalore. Yeah, very, very gratifying. कैसी फीलिंग आती है सर? क्या बताएं? I think you feel humbled and special that you were chosen for this kind of a You role, feel like a that, role. sir? The chosen one feeling आती है? You that's how it has to be. It's not like I made anything happen, right? This is how the whole. I don't थोड़ी know. तो uncomfortable हो जाते हैं ना when I Destiny, put you yeah, in that's that. a little bit of goosebump type of feeling, yeah. But yeah, this is what destiny had in store for him and me, and I feel blessed. Sir, one of the last segments that I want to touch base is आपने बोला कि जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, है ना, फूड एंड उसमें भी बहुत मिथ्स हैं सर कि ये खाओगे तो ये 7 दिन खाओ तो आपका लिवर एकदम वो सुपरमैन बन जाएगा. दिस अ लॉट ऑफ टॉक ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑल्सो, दैट इज टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, थिंग्स लाइक दैट. सो आई वांट टू जस्ट डीप डाइव लिटिल बिट ऑन द डाइट एंड द फूड पार्ट. सर, मेरे पहली चीज़ आई वांट टू टच बेस इज any 3 or 4 superfoods for the liver that हम तो अभी लिवर ट्रांसप्लांट तक आ गए ना सर, कि ये स्टार्ट ही ना हो, ये प्रोग्रेशन ही ना स्टार्ट हो. Any 3 to 4 superfoods that you want to suggest, and then I have my series of some Q&A that I want to again myths. मेरे को आपके साथ बैठने को मिला तो मैंने myths ब्रेक करने हैं यहाँ पे. देखिए, ऐसा है कि लिवर के लिए सुपर फूड्स क्या होंगे? लिवर के लिए सिंपल फूड्स आर सुपर फूड्स. सो लॉट्स ऑफ vegetables, some fruits, beans, and some cherries and berries, and of course high protein diet, and avoidance of saturated fats, and having the right kind of and right amounts of oil, and not having any processed food, and obviously having no or very mild moderate quantities of alcohol. So this is what is all good for the liver. well, लिवर ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो, कहते बेसिक खाना दे दो, I'm Basic happy. khana is good. है ना, Basic I'm khana is happy. good. You must have heard of Mediterranean diet. Yeah. So that's liver friendly diet. A lot That's of body friendly, liver Yeah. friendly, heart friendly. एंड सर एनी 3 मिथ्स, क्योंकि आजकल सर सोशल मीडिया का एक फ्लिप साइड भी है कि इंस्टाग्राम पे और बाकी चीज़ों पे लॉट ऑफ पीपल, हर कोई आजकल डॉक्टर बना हुआ है, तो वो बोलता है आप ये शरबत पियोगे तो आपका लिवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डिटॉक्सिफाई हो जाएगा. एनी 3 मिथ्स और फूड्स दैट यू वांट टू ब्रेक राइट नाउ टू आवर ऑडियंस कि भाई ये मत करो. डिटॉक्सिफाई लिवर को कौन करेगा? लिवर तो खुद ही खुद ही एक डिटॉक्सिफाइंग यूनिट है बॉडी का. वो तो आपके और मेरे अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जाती हैं किसी भी रूट से, उसको डिटॉक्सिफाई करता है. तो लिवर को डिटॉक्सिफाई करने वाली चीज़ अभी हुई नहीं है. या तो इन्वेंट नहीं हुई है, आइडेंटिफाई नहीं हुई है. बिल्कुल मिथ है कि आपने पूरी रात शराब पी, अगले दिन आप मिल्क थिसल ले लीजिए या लिव 52 ले लीजिए और आपका लिवर बिल्कुल सेट हो जाएगा. दैट इज नॉट करेक्ट. दैट इज टोटली और रॉन्ग. लोग मार्केट कर रहे हैं सर इन चीज़ों को, क्रेजी. बट मार्केट पुश तो मतलब वी आर एट फॉल्ट, राइट? वी बाय दोज मिथ्स, राइट? वी बाय दोज मिथ्स एंड देन वी बाय दोज प्रोडक्ट्स एंड वी फ्यूल देम. I mean, fuel the myths. करेक्ट. सो यू सेइंग सर कि जो भी ये शरबत और ये ड्रिंक्स बन रही है जो डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, इज अ कंप्लीट नॉनसेंस, कंप्लीट मिथ. Absolute hocus pocus. Nothing. सर, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, sir, I want to talk about that on when we are on the diet, right? ये तो myth, is it a myth? Is it fact कि अगर हम 16 hours fasting करते हैं, right, only water fast कर रहे हैं, 8 hours की window में खा रहे हैं, does it help the entire body? Does it help the liver? Can you talk about intermittent fasting? Is it good firstly for the liver? Is it not good? So, intermittent fasting is a popular and fairly effective method of losing weight, right?
And the whole point of intermittent fasting is that it gives the nutrients that you've already ingested in the two meals. So it basically it assumes that you're having two meals, whatever time you want to have those meals. I mean, possibly one at 11 a.m., the other one at 8 p.m., right? Or 7 p.m. And the time between the 7 p.m. and the 11 a.m. meal is basically largely fasting. You can have water. So yes, it does give a chance for the mechanism, the digestive mechanisms of the body, the metabolic processes to be efficient, right? Rather than keep loading them with more and more glucose load and fat load, right? So yes, optimal utilization of the nutrients that you've already ingested and time for the body to recoup. Because what happens is that when there is digestion happening, the blood and the hormones activity is completely different from when there is no digestion happening. So a kind of a rest of those 14 or 16 hours. So there are several routines. Intermittent fasting is, typically 8-16, but you can also follow a 9-15 or a 10-14 routine, which means that you give a space of those 14, 15, 16 hours for the body homeostasis to be in perfect shape. So because you're not overburdened with excessive glucose load and excessive digestive responsibility to the body all the time, therefore what's happening is very efficient and it also helps you lose weight. So सिर्फ लिवर को नहीं बेनिफिट लिवर करता, को नहीं सबको ही, बेनिफिट करता है, पूरी बॉडी को बेनिफिट करता है. body. Hormonal axes are let's say benefited by intermittent fasting also, right? So the hormones function in their optimal state. So you normally recommend कि जो 14-15 आवर अगर फास्ट कर रहे हैं लोग, जैसे रात भी तो फास्ट ही हो गए ना सर, लाइक रात तो हम लोग नॉर्मली 8-10 घंटे फास्ट करते हैं. 4 to 5 hours अगर वो और ऐड कर लिया, so it helps the body. But there are a lot of people who may not lose weight by doing intermittent fasting alone. So because everybody's system is slightly different. Yeah. So if it works for you, it's good. There's nothing wrong with it. And it reduces inflammation in the body. मेरे को ना सर एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है, विच आई थिंक माइट बी वेरी क्लोज टू योर हार्ट. You've given your life, sir, literally life to this country, in curing people. The impact has been incredible. In the last 3-4 years, sir, there has been a lot of social media पे भी देखा है कि lot of attack on doctors. जैसे hospitals में doctors पे attack हो जाता है, right? And you spent almost 4 decades serving. What? So how does it feel? Those are very sad moments actually, because no one that I know actually became or becomes a doctor to earn money or to harm people. Every single doctor I know, friend, family, colleagues, it's their calling. They want to be a doctor to help people feel better, or to make people better, or to do their bit in making people better. Maybe it's too tall to say that you're actually curing people. Maybe the cure happens because of a whole team and the Lord above. But the attempt is to cure people. The attempt is to heal people. So it's the healing zeal and the calling to do this your entire life, which makes you a doctor. I had no clue that I'll be a transplant surgeon when I decided to be a doctor, leave alone do India's first successful transplant, or imagine that I am, I'll get where I am. No, obviously not. It just, the concept was nice, that you heal people, you make people feel better, you bring smiles back to their faces when they're suffering, blah, blah. That's what actually drives most people to become doctors. But just because one is spending money on an expensive treatment, unfortunately, it does not guarantee you life or health. There will be 1, 2, 3, 5% patients, depending on the procedure and the treatment that you're getting, that don't do well or even die. And now that's not a good reason to beat up the doctors, because they still tried. They did everything in there. In fact, the patients who were sicker, we worked harder for them. And this was this happened during the pandemic. There were several instances of doctors getting harmed by angry relatives of people who didn't make it. But this is not really the doctor's fault. I mean, in most situations, there may be 1 out of 1,000 where there may be a incidence of negligence or whatever.
I can't take that away because I don't know all the facts about every situation. But by and large, doctors will always try their hardest. If somebody sits here and says, I've come to you because the previous 3 doctors didn't do a good job, I get very upset. I'm not sitting here to, find faults in other colleagues because everybody tries their hardest. So, people should understand that the doctor will try their hardest. Sometimes the treatment is inadequate in general, there is no 100% cure for a certain thing. Sometimes the doctor tried, but it didn't work because yours was the 4% or 6% of the people who don't really respond to that treatment. And very occasionally, they may be an omission, not a commission, but just an omission of a treatment step that should have been followed. Again, not done on purpose. And the very small percentage of commission where somebody has knowingly caused you harm is so minute that if you think of the violent incidents on doctors and the instances where the doctor is actually at fault, I would think it'll be like 1,000 to 1. I can't say that they're never at fault, but I think most instances are incited by the fact that somebody has spent a lot of money and their patient didn't make it, so they're just upset with the hospital and they're upset with the doctor, and usually very illogically. Sir, आपकी क्या inspiration थी? When you were growing up, as you said, that no one can see the future, right? जो आप अभी पहुंचे हैं यहाँ पे, but while you were growing up, like AIMS में आपने 11 साल लगाए हैं, उससे पहले were there any inspirations at home, or you said मेरे को डॉक्टर बनना है? So my family also had a lot of doctors. Both my maternal and paternal grandfathers were doctors, and I saw them practice, cure patients, and so subconsciously I think that motivated me, and I thought being a doctor was a very good thing because if somebody was unwell, you made them well. When I was very young, that's all you could think, right? You don't think beyond that. And then somehow the feeling stuck. And then as I grew into, high school and stuff, and it was time to choose your career, it was kind of an obvious thing that I would be a doctor. Even though my father and mother are not doctors, but there are lots of other people in the family who are doctors. And yes, I think they were indirect or direct inspiration. And I was in an ecosystem of where a lot of patients were getting healed by doctors around me. So yeah, that motivated me. Sir, मुझे तो लगता है you're the chosen one, and I think every person who's seen this podcast, जो देखा है, would feel you're the chosen one. I'm thankful to you and your wife कि वो Cambridge में जब आपने वो discussion की that you came to India, performed India's first liver transplant and serving so many patients. Sir, I am मेरे को तो बड़ी बार गूज़बम्स आए सर आपने जो जैसे आप बात करें, बट थैंक यू सो मच सर फॉर दिस. I'm sure because India, I'm a huge believer in the India story, and I feel that the youth of India is the future that will make India, Bharat, what it is. And I think this podcast can be a kind of a masterclass podcast for all the people, because jigar to sabka hi hai sir. Jigar to sabka hi hai. Padam Shri Dr. Arvinder Soin, it was an absolute pleasure, sir. Thank you so much for your time, sir. I really enjoyed the podcast. Thank you very much, Simalpreet, and the entire team. Thank you, sir.